the second day of the meeting, and we are happy to have you all here. And as you can make out, we have some new persons in common, and we start the session exactly on time, 2 minutes late. So, first we start with Abhay. Abhay works in Madhya Pradesh in Shivpuri, and he has a model for doing legal aid work, so we'll tell you about that. I'm a graduate of the National Law University of Odisha, and I basically belong to Shivpuri. It's a district in Madhya Pradesh. It's near to Gwalior. And what we have been doing in Shivpuri is that initially, when all the law students and students from different fields, when we were there in our respective colleges, we wanted to do something for Shivpuri, as we came across diversity of issues there. And when we went to the villages, there is a Sahariya tribe, which is a particularly vulnerable tribe group. And when we went to the villages, we found out that there are so many people who are dying of malnutrition, the people who are in bonded labor, the people dying of TB, silicosis, and the reality which we saw there, we could not accept it. We, as law students and as students from different fields, we thought that something should be done, either legally or socially, so as to address these issues, which is in urban Shivpuri and rural Shivpuri. So we started exploring our way as law students at what could be done to translate this injustice into illegality, so that we could address these issues. And that is where we started contacting different authorities and started office there. And you know, we started filing RTIs, getting asking for all the information related to what happened to the Forest Rights Act, whether Forest Rights Act were given or not given. And then when we came to urban areas, we understood that equal problem exists in urban areas in relation to manual scavenging, in relation to minimum wages to Safai Karamchari, in relation to, there has been subsequent drought in Shivpuri from the last 3 years. We are getting continuous drought. And the situation now there is that everyone, each and every family has to fetch water in the camps. So these drastic environment crises have to be addressed legally and socially. So as law students, what we did was, we were there in our second year and now recently graduated. So all of us started devising legal strategies. That how could we address all of these issues in a very structural manner. So then we thought of starting a library cum legal aid clinic. That education is very important for all the students and youth there. First, to address that issue, and then at the same time addressing the legal aid issue. I would just mention 3 examples of what we have done there. First was in relation to environment conservation. So, as I mentioned, that there was drought, and as the situation is really worse. So, and we figured out that there were 18 water bodies in Shivpuri, and now there are just 5, and those 5 are in a dilapidated state of affairs. So we went to the authorities, gave them applications that you should clean them under this law, you should remove all encroachments, and that there should be a management plan for all these water bodies so that groundwater level is increased and we don't face the crisis that we are facing now. As the authorities no action was taken, we gave it again, we waited for 5 months, and then we were thinking of what to do now, because as law students we have already exhausted some of our remedies. Then we thought that okay, let's try with filing a case in National Green Tribunal, Bhopal. We had least experience of arguing in the court and filing cases in the court. But somehow we really wanted this thing to happen, to conserve these water bodies, so that the crisis faced by almost 2 lakh people in Shivpuri could be at least addressed in the least manner possible. So we filed a case in NGT, and we had no advocate at that time in Bhopal who was interested in taking up such cases. So we had to argue our own case ourselves, and somehow we filed it, and within 5 months we were able to get final orders in our case, which said that okay, all encroachment should be removed,
There should be cleaning of water bodies that should take place. And in the meanwhile, while this case was going on, we were visiting all the drought hit villages as well, understanding that whether the urban area is already facing it, but what is the situation in the rural area? And this is how we went into understanding the complexity of the issues and how they are interlinked. And after the orders were passed in March 2016, getting compliance was another factor. The authorities got the order, they did some work just to show the court, okay, we have done something and we promised to do something, but nothing happened. And then again we have to threaten the authorities that we will go for contempt petition if you don't clean the water bodies. So for the first time in Shivpuri, it happened that all the natural drainages, which are of the length of 12 kilometers, all encroachments were by people who, the MLA had encroachment there, the mayor had encroachment on the natural drainage, every authority who could encroach the water body had encroached the water body. And for the first time it happened that 250 establishments were removed from all these natural drainages, and they were cleaned after 50 years, and one could see their natural form, that how they flow. So this is what happened in the water bodies case. While we were on our drought yatra to all the drought hit villages in Shivpuri, we noticed something very peculiar, that on all the walls of BPL houses, it is written Mera Parivar Gareeb Hai, or it is Main Gareeb Hu. So we went to one village. We found out that we went to another. So this is village Vinega. It is predominantly a Saharia village, or all of them are BPL families. Like outside each wall, it is painted like Mera Parivar Gareeb Hai, and you have to write the BPL number and everything. We went to another village, which is Balarpur, which was a displaced village from the national park. And there we found a similar situation. We went to next village and next village. In every village, the situation was the same. So then we were again thinking of legal recourse. And when we asked the villagers, who has written it? They're like, Sarkar ke log aaye the likhne. And we were like, why have they written it? The simple answer was, agar hum log ye nahi likhenge, na hame ration milega, we won't be given any entitlements that are supposed to be given under the BPL category. So we complained to NHRC, and somehow NHRC took cognizance of the case. Within 2 days, we found that like 150 villages in Shivpuri had such things painted on their walls. That was removed, and the village we started with, that is the Vinega village, it didn't have water, it didn't have electricity. Within 2 days, electricity came there and water came there. This is how we moved from one case to another, figuring out what the legal issues are. So another case is Balarpur. So Balarpur was a village basically, which was 10 kilometers inside the national park. In 2002, the forest authorities asked that you should move out, and they said that you will be given land and house and everything. So, but nothing was given. Only 61 of them were given, and 39 were said to adjust with the others. So we again filed a complaint with the Madhya Pradesh Human Rights Commission. Those orders have come last December, but as I said, compliance is another battle. Similarly, we have been trying to provide legal aid to Narmada Bachao Andolan. Everyone of you must be knowing about what the issues there are. That even after Supreme Court orders, even after various orders of the High Courts and GRA orders, thousands of people are still remain to be rehabilitated there. Thousands of people are still waiting for a compensation, and whenever it rains, now it rains, it looks quite good here, but whenever it rains, there the water rushes into their houses still. So in Narmada Bachao Andolan, we are trying to represent people and help them make representation to various authorities there, so that they can at least start the process of, because they have got orders already in place, but compliance is another battle. So right now we are trying to do that. The present state, we are running a legal aid clinic in Shivpuri. We have been accredited by the SLSA, which is not very helpful though, but we have been accredited by the State Legal Services Authority. And now we are trying to come up with a model in which it is a twofold model, that we just don't want to
go into court cases all over again. We also want to empower the community so that for simple applications of ration, pension, pani, they can exhaust their remedies themselves and they don't need us to do it. So this is what our model is trying to achieve. I'm Neha Philip. I'm working with HRLN in Bombay. So I started my career as a lawyer in 2016. And when I started, my first case was where I would say that she was a victim of human trafficking, but she was charged with transplantation of human organs and cheating and forgery and all that. And then we went ahead and we filed for bail, and she was released. She was granted bail, but then the bail amount, not considering her economic conditions and her socio-economic conditions, there was a huge bail amount that was the condition that was put on her. And added to that, there was surety and all of those issues. And every case that we have been working on, where we be representing these persons, bail has always been an issue. Bail amount, bail surety, the cash amount, all of it has been an issue for us. Whenever we file a bail application, and even if the bail has been granted, we have to prepare another application for reduction of the bail amount. So, with that one particular case, the first case that I got was human trafficking case. It really riled me up, and I was very angry that that judges cannot be so insensitive on not realizing the socio-economic conditions of the accused persons. And that's how I went ahead and filed for RTIs and to figure out how many people are in prison right now who have been granted bails and not released. I interviewed police officers to find out what is the lacuna, what is stopping. First thing, you're not supposed to be arresting under Section 41, where there is exception to not arrest people. So interview police officers, and finally there were police officers who really helped us in understanding the scenario, and the Radhakrishnan committee that was formed, we were invited to provide our suggestions around it. Finally, I decided that the best move would be to file a PIL with the Bombay High Court, and that's how we went ahead. And I filed a PIL with the Bombay High Court under my colleague's name, Archana Rutuate. And we went ahead, and right now that matter is stacked with the other PIL where the committee of retired Justice Radhakrishnan was formed. And right now we just found out that the final report has been filed by the company. So hopefully there has to be a change in the system, because so far what we have experienced, as yesterday Nansa secretary was saying that judiciary cannot be blamed, but absolutely judiciary has to be blamed, because the judges so far in all our bail applications, with respect to at least bail amounts or just granting of bail is not helpful. It just doesn't help any accused person or any under trial. What is required is to have some sort of, apply your minds and consider the factor that they will not, even if you tell them you are supposed to pay cash bond of 2,000 rupees, there's a huge amount for them. So you're considering that 15,000 is an amount which would be reasonable enough for them to not to protect the court or the police officers from the risk of them running away is not a reasonable argument to make. So that was the first case that we went ahead with and we filed a PI. The next one yesterday, when people were talking about jail lok adalats and jail courts and all, which I fundamentally have a lot of issues with, because people, as everybody here agreed with, we have been told that the letter that has been sent by the High Court, the Bombay High Court itself has sent letters to magistrates saying that that people who have been charged under petty offences or who wants to plead guilty, that statement itself is so problematic, where you're not even explaining the accused person the consequences of it, because we know that there, even be the case of petty offence, be the case of theft, we know that they are always in target. Once they have been convicted,
they continue to be arrested by the same police station or police officers and put in prisons. So we are never told that the consequences of pleading guilty inside prison. We are being told that the magistrates visit prisons once a month and once a week from every magistrate court. There will be a judge going to prison. There will be people standing in the line and asked, okay, this is what is going to plead guilty. This is good for you. Just do it and you can get out right now. But you never explain them the consequence. You are not providing them legal aid. So then we file for RTIs with a lot of information, and surprisingly, even High Court, when we filed RTIs with respect to the letters that have been sent to the magistrate court, they refused, they rejected our application saying that it is not within the public domain. I mean, when you make such a statement, definitely you understand that there's so much problem in it. The court themselves know that there's so much problem in it, and they know that what they are doing is just an easy way out to cover up the overcrowding in the prison. That's a very easy way for them to do something of this sort. And that's how then we thought that I went for a first appeal and still nothing. I mean, it continued to be rejected, and then I was like, enough is enough. So then we went ahead and filed a PIL in this matter also, challenging the constitutionality of the courts. And yeah, I mean, so far the work that we have been doing, I cannot lose hope with the court system, because this is where we can find a way out for the rights that we want to work on, for the initiative that we are close to. And with each disappointments, I think I'm getting even more riled up and want to fight against it. So yeah, that's what my story is. I'm Archana. I'm also working in Bombay HRLN office. Since 6 years I have been working with the HRLN, and since 6 years I have been on the legal aid panel. I'm a legal aid lawyer. So while doing legal aid, since initial few years, I had to spend to understand the legal aid system and how the legal aid works in our country. I heard a lot of things yesterday. Daily legal aid services are providing so many services. I don't know how many are true, but in the way they were talking, the legal aid clinic is available in the police station, in the jail system and all. I have seen it whenever, as I am a legal aid lawyer, Sanjay is here and many legal aid lawyers are here, they can also share their experience. Legal aid system, they only use those lawyers just to collect the data. Whenever Supreme Court guidelines comes, we are filing as usual, like calling sir, and many people file for petitions, PILs in Supreme Court, High Court, and as for those PILs and High Courts, they give a direction to the NALSA give a direction to the state legal authority, state legal authority gives direction to the state district legals, and they usually just collect the data, they send the same data and this filing the affidavit that they comply with this. Whatever the situation and all. Recently we have done a survey. The legal aid office secretary just called me and he's like, madam, you have to come and you have to collect the data from the prison. The data was basically about the health condition, women's health condition in prison. And it was only for them, they came, just took the photographs and told us to sit there for some time. They took a photograph and they submitted those forms. And they called the students. I mean, I am not feeling very good about it because students are also coming there. They just want to see the jail. I spoke to them personally. Students just came inside. They just wanted to see the jail, how jail system works, how the barracks are. I want them to a little bit be cautious when they are doing something, when they are submitting some form for somebody who is inside for years. So they should be they should more think about it, what they are writing. They should not just say, because prison authority or legal aid system wants them to fill some forms, they should not fill those forms. These are the some issues little bit which I want to flag in. And another is accessibility in prison. In legal aid is district legal service authority is a very good tool. We can through the legal aid service authority can enter inside the jail, but that should be only used as a tool to enter inside, and you can do your work whatever you think so. You don't have to work only for them, and like
I know it is very difficult in conflict zones to get a permission. Like शादाब से कि उनको अंदर जाने के लिए वेपॉन करने के लिए कितना मतलब प्रॉब्लम हुआ. पर इसके अलावा I want to highlight some other issues as well. Except legal aid, जैसे वाली सर ने बोला कि who will give the legal aid to the women who are there in conflict zones by officer? Who will give a legal aid to them? When I was in the like recently, I went to Bangladesh for a refugee camp. We have interviewed some women where they were raped by Myanmar office army officers. The condition was so bad, so bad. Initially we were so excited to do this work, and we went there. We were feeling like, oh my God, what is this? Those people were shot dead. Their husbands were shot dead. While coming to Bangladesh, their children were drawn inside the river. Some of their husbands were slaughtered before them. Children were slaughtered before them, like 1 year, 2 year children. And the same condition is in our country, in Manipur, in Chhattisgarh, Jharkhand. Same condition. So I want, like Sir ne jaise bola yesterday, he said, who will provide the legal aid to them? Who will provide the legal aid to the people who are lynching cases? Like Shada was saying, there is no legal aid lawyer, no lawyer. No. So I think we need to push somewhere. It's government's duty to somewhere provide the legal aid lawyer. So we can push little bit to the government. They should do these cases. That's my opinion. And another thing is. There are farmers who are doing suicides in Yarmal, and like last year, I went there for fact finding. In the pesticide, because of pesticide, many farmers were dying. Their situation was so bad. Nobody is there to help them. Nobody is there to provide legal aid or legal resources or legal anything. I met one farmer whose eyes were burnt, literally burnt. He was just crying, and he wanted, I want to die. He was screaming. And the hospital authority sent him back to home because they did not want to treat him. They said, they initial treatment they gave, and they told him, you go home. And then he was lying in the home, his eyes, he could not see, and his family was like staying in such a small hut. And the situation was so bad, there's nobody to provide a legal aid to them. So I want you people to think about it, and now the situation in country is also very bad. The prisons, whenever I go to, every time when I go to prison, in every week I go to prison, I see there are so many people who are Dalits and minority. I don't see any high class people, and whoever, if it is they are there, then they are for economical offences. And they are getting bail, but these Dalit people who are like charged for 379 for like cheating and all, like for theft and all, they theft of 500 for 500 rupees theft, the judges is giving 15,000 cash bail. If the person is stealing something for 500 rupees, how that person is going to provide the surety of cash bill of 15,000? How could you expect? So that's what Neha has said. So we filed a surety petition challenging the surety condition. There shouldn't be a condition like this. The judges should consider the socio-economical background of the person. And this committee, Justice Radhakrishnan's committee, we were there. And we have suggested many things there. ADJ or IG was there. Many people, like high class people, were there. And for just sake of meeting and sake of just to say yes, I have like asked them question. There are so many legal aid lawyers who wants to go into prison. They want to work, but they don't have 3 years experience. You need to have 3 years experience for getting on the panel. And there he said, okay, you just make an application, we'll give you permission, don't worry. And Justice Radhakrishnan also suggested him, please give them permission, and then for sake of that, he said yes. And later on, we made an application specifically stating that we were there in the meeting, and as per the suggestion, we are doing this application. Now this
IG, he just rejected our application. He didn't reply. He did not even reject it, he just didn't reply. I wanted other lawyers to be on the panel, so reason panel, so they can also enter. So this is how the condition is. I have a lot of issue actually to speak, but I know there is a time limitation. So I just want you guys to think about the legal aid. Like yesterday sir said, who will provide legal aid for the women who are rape victims and farmers. And there are cases happening, social boycott. Recently in Nasik, I went for fact finding that this guy who was staying in the village, small village. He's a blacksmith, and his children are studying there. By birth, he was there. His children are studying there. He has 3 kids. One is in 10th class, another is in 8th and 5th. And suddenly Gram Sevak and Sarpanch issued a notice that you will have to leave our village. And they were like pressurizing him. They took out his whatever he has a small shop which was on the rent, but then they pressurized him so much, so he was basically trying to leave the house and his shop. And then suddenly one social worker I went there and made an application to collector that this is the social boycott case, we cannot do this. And then Gram Sevak and Panchayat Sarpanch, they said will withdraw, we will allow him to stay there. But still they asked him to make another application requesting you will not steal anything from the village, because there was an act criminalizing act which was already banned. Still they were forcing him to leave their village and all. So these are the cases which are happening in the country. That this is the small thing actually. There are so many cases every time, every day, lynching cases happen. So I just want you people to think about the not only prison legal aid, but there are other people who need an legal aid. Thank you. Gave a direction that there should be the legal aid clinics in all the jails, which were in abysmal condition till date. Secondly, we found some of the juveniles in 50-60 juveniles where when we went to jails across the state, we found nearly 60 juveniles across the jails. So on the directions of Honorable High Court, all the juveniles were taken out from jails, and some of them were handed over to their parents, and some of them were transferred to juvenile justice, rehabilitation homes, juvenile homes, and on the basis of our report, the Honorable High Court implemented the directive that the ICPS scheme should be implemented in the state of J&K. And central government nearly sanctioned 30 crores by the directions of Honorable High Court, and the ICPS scheme was implemented in the state of J&K, and nearly 150 posts were advertised in the state of J&K. Social workers were appointed, some professional officers were appointed, physical teachers were appointed, and many other posts were advertised, and they were it was 150 cases, 150 persons were appointed. So on the directions of Code 1, the jail authorities were directed that no juvenile should be lodged in the jail, and whoever juvenile was in the jail, they were directed to be taken out from jail and sent to juvenile home, and they were handed over, some of them were handed over to their parents. So it was on the directions of court that, and plus juvenile justice boards have been constituted after the directions of the Honorable High Court. Juvenile justice boards and child welfare committees have been constituted. So after
the education of 2016, there was a rapid use of pallet guns in the state of Jammu and Kashmir, particularly in Kashmir Valley. Nearly 4,500 young persons who were aged between 21 to 25, they were, their eyes were totally gone, they lost their eyesight, they were not in a position to, they have totally lost their eyesight. So we challenged, we did a fact finding and on the basis of fact finding, we filed a petition in the Supreme Court. That petition is pending in the Supreme Court, Honorable Supreme Court. Plus, we are providing the legal aid to those persons who are illegally detained by the security forces and against whom the Public Safety Act, it's a draconian detention law which are being used against these persons, politically, the person who have the political ideology. And we also take up the cases of spoon peddlers. I mean, in 2016 and 2017 itself, we got trained out nearly 150 persons, young persons who are aged between 14 to 25. All of them were, brave the sections of RPC, Revenue Penal Code, they were slapped against them. And some of them were detained in Public Safety Act also, which is against the law. And regularly we are taking up their cases, we handle their cases, we get them the defense in the trial court. Plus, there are some health related issues we are presently handling in the High Court of JNK. In one of our PIL, that was regarding the high mortality rate of infants in the government hospitals. So after hearing us, Honorable High Court gave a direction, a slew of directions to the authorities that how the health facilities in those institutions can be improved across the state. And it was on the directions of the Honorable High Court. The infant mortality rate, which was at one point of time like 1,400 children were dying per year, it has drastically now gone down to like 10 to 12 infants are now. Ventilators were installed in the hospitals. Proper manpower was given to the hospitals across the state of Jammu and Kashmir. And I'll talk about one more case. It's a very interesting case of a young Rohingya girl who was trafficked from the Rakhine state of Myanmar and was brought to the territory of India. That girl was sold to a Kashmiri person in Delhi at 80,000 rupees. So initially we drafted a complaint. When this matter came to me, I drafted a complaint and filed it before the SP and the SHO. The police officers refused to take any action against the person who had purchased this minor girl. She was just a 14-year-old girl. So immediately when the police officer refused to take action, we immediately went to the High Court and filed a writ petition in the High Court. So on the very first day, the DGP was directed to bring this minor girl before the court on a state of hearing. That was after 2 days. So after 2 days, her statement was recorded, and in her statement before the registrar, she stated that she has been kidnapped from Myanmar and sold and brought into the territory of India and sold to a Kashmiri. So immediately the girl was rescued and was handed over to the juvenile was handed over to the authorities of juvenile home. After a period of 1 year, it was on the direction of the Honorable the Chief Justice at that time, Honorable Justice Bharat Pradesh. He
directed that authority that the girl should be given the proper stay visa so that she can stay here. On the other hand, the state was pressing that she should be she should be sent back to Myanmar. So, co-directed, no, you cannot co-directed the state that you cannot direct this final girl to be handed over to the Myanmar government at this point of time. So, a proper visa was given to her, despite the fact that despite the fact that central government is not giving visas to anymore at this point of time. So, on the direction of court, proper visa was given to her, and her custody was given to her maternal uncle who is living in Delhi. So, it was just 2 months back her custody was given to her maternal uncle, and she is now living with her maternal uncle. And plus, we take up regularly the cases of student offenders, particularly the young ones who are very like juvenile, we would say. They are arrested by the police and they are being kept in regular jails, and so we are taking up also those cases, and there are many other issues which we are handling at this presently, and yeah, thank you. Thanks very much. Thanks very much. Good morning to all. Vanakkam. I am Alagumani from Madurai, Tamil Nadu. First, I would like to thank my dear senior advocate, Sir Colin, for providing me opportunity for participate this landmark training program. I think this is the first program in entire India, particularly for 3 days exclusive program for researchers. I filed more than 4,000 habeas corpus petitions before the Honorable Madurai Madras High Court, particularly against preventive detention cases and illegal custody. When I completed my PhD program in preventive detention, I found out most of the preventive detention prisoners from weaker section, particularly minority and Dalits, they are targeted. Now also the Sterlite protesters from Thoothukudi also they are detaining and the preventive detention following what is under prison. Now I want to share some public interest litigation petitions filed by me and my colleague Mr. Raja sitting behind. We study in Madurai Government Law College. We filed some public interest litigation petitions relating to prisoner rights. First we filed the child-friendly interview hall. There is no child-friendly interview hall in Tamil Nadu. Prison is prison, whether it is situated in Kashmir or Kanyakumari or Kasi or Rameswaram. Article 14 is exclusively practicing in prison relating to inequality. This prisoner's child below 18 years who went to meet their parents, there is no child-friendly environment. They see the prisoner parent behind the iron bars. Therefore, we are filing for separate meeting hall like Anganwadi system in foreign countries that is pending before the Honorable Madras High Court, Madurai bench. And we filed petition relating to distribution of prisoners' wage. After Justice K.T. Thomas' judgment, wage given to prisoner. But in Tamil Nadu, 50% of the wage from the prisoner deducted for the keeping the prisoner. It went to the state government, and 20% went to the victim family. Only 30% of the wage sent to the pocket of the prisoner. That 20% to the victim, not distributed to the victim. It simply accumulated in the prison fund. We filed petition. Now, Honorable High Court Division is directed to disperse the fund to the victims within the period of 6 months. And also, we filed petition for deduct the 50% of the wage deducted by the state for reduction of the deduction. That is pending before the High Court. And we filed petition for release of the senior citizen prisoners who more than 65 years for permanent premature release for age reduction. Honorable High Court directed for consider the claim. Tamil Nadu government issued the GO for life convict who undergone more than 5 years are considered for the premature release. But unfortunately, again, the government withdraw the GO. Now we are looking for
cancelled that GO before the High Court. And we filed petition for opening a de-addiction center in each child observation home in the state of Tamil Nadu. It is available in JJ but not practiced. And we filed petition for in Tamil Nadu Palayamottai Central Prison, the prisoners keeping on caste basis. There is 5 blocks, scheduled class 1 block, backward community about 3 groups and 3 blocks. We filed petition against that system, but Honorable High Court upheld the case-to-case separation. We have at that time we have no contact to file petition before High Court. Now my senior is available. We are very happy to file petition. If they defeat in our High Court, we will file. We have get such type of confidence by attending this course. And we recently, before 2 months, Honorable Justice Vimala passed a historic judgment in a criminal appeal case. We filed a criminal appeal before the Honorable High Court for a life convict. Honorable High Court, while considering the life convict, that convict allegedly killed his wife. Wife died, husband inside, 2 children, without any support there with the grandparents. Honorable High Court considered the case and issued direction to all central prisons to submit report relating to the children of the life convict prisoners to the High Court for and directed the state also to prepare a scheme for keeping for how to maintain the prisoner children, particularly the spouse murder case. That case is pending. We filed criminal appeal, but Honorable High Court expanding the jurisdiction with that is also pending. And the public interest litigation filed by my friend Mr. Raja, that is relating to aftercare. Before 20 years in Tamil Nadu, there is a Tamil Nadu Prisoners Aid Society, which was concerned lot of properties, main properties in Mount Road, Chennai, Anna Sagai, several properties. Now it occupied by several civil litigations, no income. Therefore, government started to close the aftercare centers. Now the aged persons and without supported prisoners under 15 years, 20 years, when they come out, nobody come forward for support some of the prisoners. Government have duty to protect them, but now aftercare homes are slowly closing. We filed petition which is pending before the High Court. We are up to our level we are trying in Madurai with a small team. We are not a big team. Myself and my 4 junior advocates, some law students. We are mainly focusing on preventive detention cases. Each prisoners give some money. We spend some portion of the money to others. Because by way of 500 or 600 rupees, we can find a petition. In Tamil Nadu, amount is only very few, but our time, we have to spend our time. Now, after attending the yesterday program, I have got idea for filing about some of the period petitions because of this program. After go back to our native place, we try to implement this. I want to explain. One is for relating to the way the prisoner admitting into the prison, they make nude in the name of checkup. They make nude and a thorough checkup. When they enter the prison, their dignity of the individuals goes. That's it we have to find. And handcuff. The Prem Sangha Shukla case was before 2-3 decades. But till now, every day in Tamil Nadu central prisons, in the prison gate, when the prisoner, trial prisoner, underprivileged prisoner comes out, the police escort waiting with the handcuff. After entering into the trial courts, only they, in the police van, they out the handcuff, enter into the trial court, then went to prison to trial courts, handcuff. We want to file some petition, get compensation, but we want to file overall petition for implement the Prime Sangha Shukla. And to this prison wage system is very, the deduction amount is very high. When they pay the minimum wage, but they pay 100 rupees for skilled labor, only 30 rupees went to the prisoner pocket. And to this for review of prison manual and enactment of Prison Act in this. And for open air prison, we filed petition for implement the Ramamurthy case relating to open air prison. Now Tamil Nadu government directed to open air prison in every central prison campus, one open air.
but Tamil Nadu there is no women open a petition. We will try to file petition in future. And changing press code for prison staff and health and mental health, particularly mental health for the prisoner, aftercare home for particularly women and juveniles, and particularly for considerate the prisoners' children, particularly life time prisoners, prisoners interview hall with the family, and doctor strength and implementation of the Supreme Court and High Court guidelines, access to library. Every central prison or district prison there is a library, but access is doubtful, very questionable. Very influential prisoners can enter into library hall. And uniform rule for the parole. Parole, it depends. It depends upon the economic condition of the prisoner and food timing. In Tamil Nadu, dinner provides 4 p.m. 4 p.m. dinner provides at the time of 10 p.m. you have hungry for the change and sanitation, disability prisoners and de-addiction center and the implementation of progression of Focus Act and other provisions. Because of attending this training, you have got larger idea, larger contact. I would tell again thanks to my dear senior advocate and other participants. Thank you. Thank you. Good morning, everybody. Thank you, Sir Colin, for allowing us this opportunity. No, we are not orators, we are not good in speaking, but we take the opportunity to share our experience. I am Agnes Hashim from Meghalaya, the state of Meghalaya. I am a social activist, and since it's prisoners' rights, I was also a prisoner. I had been arrested for helping eviction families. About 8 families were evicted, falsely evicted because of a township in our state. And the government was trying to take land which belonged to those people, so we stopped the eviction, and they implicated us on saying that we tried to burn the JCB that was going to mow down these houses, which had literally mowed down the houses. And they made 2 cases out of 1 occurrence. I'm not a lawyer, though I studied for 1 year only, but I found that what was practiced in court and what was taught was just opposite, so I started continuing with my social activism. And I've learned many things from court because the government has put so many cases on me. And I learned that I was put in 2 cases for the same occurrence, cause of occurrence, and it was split into 2 courts. I didn't know actually, first of all. Then later I took out certified copies of both the cases. One was in another court, one was in another court, and when I tried to compare them, I saw that the officer had filed the FIR on behalf of this JCB driver, and then he also was made to file. So 2 cases came out of it, and then luckily I had a lawyer who helped to appear in these cases, and when we got out the documents, we found out that I had to study nicely how to make out, because I was confused what are these 2 cases. So when I saw that the case was the same, we tried to club it together. And it was only recently that we managed, because the courts also, maybe there's political pressure, the judge will be on leave, then there will be adjournment, and it continues. And finally, after just a few months back, we got it clubbed together. The case was from 2013. So this is, but when I was in jail, I found out that there was another lady who was arrested for 5066, and she was not produced in court. But in the meantime, I had learned certain things that you have to be produced every 14 days and all that. So since she was not produced, I asked a paper from the jailer. Just to go back, my father was a politician who was also arrested during the emergency time in 1975. So the jailer, when I was taken to jail, he thought I knew law.
because he thought I would be there. So he was offering me many things. You want a TV, you want this, you want that. Then I knew that these are our rights. So I translated into further telling my other inmates, this is not right, this is wrong. So I asked for a paper. They gave me a paper immediately, and I wrote on her behalf to the jailer that she should be produced and this whatever has to be done. So they did it. And then I saw some wardens who were making these inmates UTPs work, wash clothes, do this, do that. But they were not telling me anything, so I told, that is also my right, maybe that I should not work. So I told them, don't work, you just sleep. So that is what we did. We tried to, so they got fed up of me, they were wanting me to get out, the wardens. When will she be out? Because I was telling in the girls section, women's section, that don't do anything. They cannot order you to work. You're only a UTP. You cannot be made to work. So these are certain things that we pass on. And as for legal aid, I would say that most of you are young, you're coming new to this profession. It has to come from the heart. Because if it doesn't come from the heart, you cannot do it. Because I've seen some are complaining that we don't get much money. We are social activists, we are not paid. But I'm just fortunate, I have a house and I feel I have to tell my children don't want more because I've seen injustice, I've seen poor people who struggle for a meal a day. And some villagers have no electricity. And I felt guilty telling them, I explained to them, I said, do you want electricity? They said no. I explained to them that if you get electricity also, the bills will be brought which are just assumed bills and they'll have to pay. So I told them then they only told me we have that solar lamp. They bought it 2,500 and they're happy. They don't have those bills coming from the government which are made up bills. They don't even come and read the bills. They say in the name of poverty, we're giving you rural electrification. It's all a garb. It's nothing serious. They're not even bothered how much those people have to pay per month, and it's quite huge because for poor villagers it's not an easy task. So these injustices are happening and will continue because the rich want to suppress the poor. And we have to see, especially now in this corporate world, we cannot go with the corporate because they will just mow down. They'll take away the land, they'll falsely implicate people in cases. When you do cases, when you're fighting the government, remember you have to be very careful. Because the police themselves will do the crime and implicate you in it. That's how they go about it. There was a case of a sensational jailbreak in 2009. There the person, he must have been a hired killer. We were opposing. We were opposing his bail because he killed 2 women. Their throats were slit. And we were opposing his bail. But I'm also a human rights defender. But look how I had to switch sides when he was let out of the jail, literally a walkout, and he was shot after 1 day. So when he was shot in a fake encounter, I had to take his stand. And till date, the case is there, where we filed an FIR because we knew he was arrested alive. And there was a commission of inquiry where the Supreme Court lawyer, Mr. Tulsi, was for the government. And we had a lawyer and myself who were there. And there it was a very strange judgment order passed by the judge. After passing that order, 3 days he died. After 3 days he died. And the very person whose name also was there, that IG, he was a DGP that time, he became the special rapporteur of Northeast for NHRC. And I splashed all over Facebook. I used social media for that, giving out his name because we don't want him as a special rapporteur because he was a fake encounter. He's part of that fake encounter. He was there. We had to come and depose in the inquiry. And that inquiry itself the report itself is still questionable. So this
Now he has been removed though, he was the DGP there. And this case, when we filed the FIR that there was a death of this person who was shot in cold blood by the police have turned it into FIR 3 times. But sometimes what they do, they don't even give you a reply to the court that that your case has been turned to FIR. So I get a reply after the hearing saying that I was absent. So I immediately went to the court and wrote appeared on myself and said that I was not. It was not brought to my notice. So how can I appear? So that is how the tricks they play. They don't even give you your summons or what, they delay. So I objected to the FR. Then another IO was appointed, and then again he found nothing. Again, I objected to FR with supportive documents. I filed to RTI, and in one document, it's a Caesar list. I found that the person was in the Caesar list. The gun was found from him lying in an injured condition. So, if the person was in injured condition, why did you call for a magistrate for inquest? So these are things which we have given, yet they say they found nothing in the case. So now the third FR was objected, and the court has given the SP to investigate on it. We are waiting on it now. So we are fortunate also, some pro bono lawyers, they just help me. One has come with me also. And I have at least 3 lawyers who help me, because as a social activist, they say we consider and we without charges. So if you want to work, do not think of the charges, God will provide. But think of the injustice that's going on around you. If we put in a little, God will see to the rest. Thank you. Good morning, everyone. My name is N. Silpan from Shillong. I will just discuss about some cases which I have taken up in the past. There was a case of a police officer in the local district of Jindal. This police officer, he was on duty, and what he has done is he has seized 32 numbers of trucks loaded with coal, which were flying illegally. And just after seizing of those 32 numbers of trucks, what has happened is he was found lying dead with a bullet injury on his head. And there was strong suspicion that who might have killed him. Thereafter, what we have done is we have filed a writ petition before the Honorable High Court of Jindal seeking for CBI direction on the ground that the bullet was entered from behind of his head and it came out from the forehead. And this is as per the medical report which was there on record. And the another reason was the gun was found in his left hand, even though he was a right-handed person. We moved the petition for CBI inquiry, and during the course of the investigation, police has come up with a theory that he has done suicide. And there was some other angle which has been brought by the police. Our petition was rejected by the Honorable High Court of Nagaland, and we have filed a petition before the Honorable Supreme Court, which is still pending. So we will go to the next case. We have some issues relating to environment in the state of Nagaland, even though Nagaland is quite green. Otherwise,
In the recent past, what is happening is due to involvement of some companies relating to cement plants, they have destroyed the large tracts of forest land in the East Jindal district of the state of Nagaland. So, what is happening is, without taking the forest clearance, they have destroyed almost the entire forest land. And these 9 factories, cement factories, are located in the East Jindal district, right in the boundary of the Narco Reserve Forest. And there is also a eco-sensitive zone. In spite of that involvement of the forest land, in spite of several reports, they have continuously been destroying the forest, and they have almost removed, and they started mining in those areas. They are starting to mine limestone. They have mined coal, and there are reports which say that the nearby river, which is the Lukha river, at times the water of the river turns into blue, and all the fishes are found floating there. There is a report of this State Pollution Control Board. So what we have done is, we have filed a case before the Honorable High Court of Nagaland. However, from the registry itself, the petition was returned with a direction to move before the National Green Tribunal. So we have prepared a petition and we are here, and hopefully, with the help of our sir, Mr. Colin Gonzalez, will be able to go forward with the case and will get success. And as far as PIR is concerned, from time to time we have been filing from disqualification to road, which are pathetic conditions in some of the areas in the state of Nagaland. And in some of the petitions which we have filed, we are able to make the roads. The departments have come forward and they have constructed those roads, and at present the roads are okay. This is all what I have to say. There are so many other cases also, but due to time constraints, and there are other speakers which are there. So I'll close. सभी साथियों को नमस्ते। अब छत्तीसगढ़ की हालत तो आप सबको पता है, और मैं HRLN में जैसे सर ने मेरे केस को लिया और मुझे जमानत पे बाहर लाए, तो कहीं ना कहीं मैं HRLN से एकदम नजदीकी एक रिश्ता बन गया है, और साथ साथ HRLN से मिलके छत्तीसगढ़ में भी कोशिश करती हूँ। हालांकि मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, पर मैं इससे पूरा इसलिए वो करके काम कर रहे हैं क्योंकि मेरी केस खुद HRLN से लड़ी गई और मैं जमानत से बाहर हूँ। तो मैं भी चाहती हूँ मेरी तरह और भी जो जेल के बंदी हैं वो भी बाहर आए और आप लोग के सामने इस तरह से खड़े होकर भी अपनी बातें बोल सके। और छत्तीसगढ़ की जो जेल की हालत है, और वो तो बहुत बुरा हाल है। मुझे लगभग मतलब जेलों का जो अनुभव है कि छत्तीसगढ़ जेल में 2 जगह रखा गया था, रायपुर में और जगदलपुर, तिहाड़ और कलकत्ता। तो थोड़ी सी इतना अनुभव हो गया है कि जेल में किस तरह से कैसे होता है। लेकिन उन जेलों में सबसे ज्यादा हालत खराब मुझे कलकत्ता और छत्तीसगढ़ को देखने को मिला है। और वहाँ जो मैं बोलना चाहूंगी कि महिलाओं के साथ क्या होता है जेल के अंदर, किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो महिलाओं का ये स्थिति वहाँ रहती है, एक तो जेल में अच्छा खाना मिलता भी नहीं है और आधी प्लेट खाना दिया जाता है, और वहाँ ये हालत है कि दाल भी बनाया जाए तो दाल की भी मात्रा नहीं रहती, कुछ पानी की तरह खिलाया जाता है। आलू सब्जी बनाए तो आलू की मात्रा आलू तक नहीं दिखता है। तो अगर डाइट भी कम दिया जाए तो जेल बंदियों की क्या हालत होती है। महिलाओं के साथ तो ये भी स्थिति होती है, जिन महिलाओं को पुलिस ने अरेस्ट करने से पहले बाहर में अपनी मतलब थाने में प्रताड़ना दिया गया, उनके साथ बलात्कार जैसी चीजें हुई है। उसके बाद वो महिलाएं आके बच्चों को जेल के अंदर जन्म दी। जन्म देने के बाद वो तो पता ही नहीं था कि 15-16 साल की लड़कियों को लाया जाता है और उनके साथ ऐसा स्थिति किया जाता है। तो बहू को ये नहीं पता रहता है कि मैं मां बनने वाली,
एक ऐसे ही मेरे जो जब मैं जेल में थी तब मेरे सामने ही एक घटना घटी। तो वो लड़की को अगला बोलते तो पेट दर्द है, पेट दर्द है। वो नहीं बता पाई कि मैं मतलब मेरे अंदर भी बच्चा है क्या, उसको पता ही नहीं था, क्योंकि उसको जेल लाने से पहले ही इस तरह से पुलिस ने ऐसा कर चुका था। तो जब उसको अस्पताल भेजे तो तब हम लोग पता चला कि माँ बनने वाली। जब हम उनको बता रहे हैं कि नहीं आपके पेट में बच्चा है, तो चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, ये कैसा बच्चा, काय का बच्चा, कैसे मेरे पेट में, नहीं मेरे पेट में तो दर्द है। तो किसी तरह उस लड़की को हम लोग बहुत ही सुरक्षित रखते थे और वो हमेशा रोते रहती थी और परेशान होती थी। फिर उसके जैसे ही बच्चा को जन्म देने के समय आया, उसको ये लगा कि यार मेरे को बच्चा और इस बच्चे को लेके मैं जेल से बाहर कैसे जाऊंगी, मेरे को समाज में जाना है, अपने माँ बाप के यहाँ जाना है, गाँव जाना है। तो उसने जन्म देने के ही जैसी स्थिति हुई तो अपने बच्चे को टॉयलेट के रूम में भरने की कोशिश की थी। तो हम लोग सब लोग मिल के फिर उसको हम लोग समझाए और उसकी डिलीवरी हुई और वो बच्चा काफी बड़ा भी हुआ, आप लोग के सामने ही वो बढ़ गया है बच्चा। तो ये वहाँ स्थिति है। और यही नहीं है, जैसे महिलाओं के साथ हर महीना जो मासिक जो आती है उस स्थिति में पेड़ नहीं दिया जाता, तो महिलाएं क्या करती हैं, अपना जो कपड़ा रहता है उस कपड़े को वो 4 टुकड़ा या 2 टुकड़ा फाड़ लेती है। उस स्थिति में वो महिला तब तक बैठी रहती है जब तक वो कपड़ा सूखता नहीं। तो उस स्थिति में वो जब सूखेगा नहीं, और कभी कभी ऐसा होता है कि जेल का कि बहुत जल्दी अंदर करते हैं, बैरक के अंदर किया जाता है, तो महिला उस कपड़े को गिरे में ही पहन लेती है। तो इस तरह का इन्फेक्शन होकर कई बीमारियों का सामना भी महिलाएं करती है और वो तब उनकी पूरी शरीर और हालत खराब हो जाती है। जब हम बोलने लगे कि आप लोग जेल में जरूर लाया है, लेकिन ये सब सुविधा क्यों नहीं दिया जाता, ये सब चीज के लिए बाद में हम लोग काफी लड़ाई हुआ। महिलाएं हर बार, और जो महिला माँ बनी है और उसका डाइट कम दिया जाता था, वो महिला अगर ये बोलती थी कि मेरे बच्चे के लिए भी थोड़ा सा खाना दो, क्योंकि रात में बच्चा खाना मांगता है, तो मैं कहाँ से खाना, उस स्थिति में उस महिला को रात से मारा जाता था, पीटा जाता था। तो हम लोग बोलते थे कि भाई आप इसको इस बच्चे के डाइट के हिसाब से थोड़ा ज्यादा खाना दे दीजिए, तो नहीं खाना नहीं दिया जाता। तो उस तरह से महिला का मतलब स्थिति है। और महिला के साथ क्या होता है कि जब अरेस्ट करने से पहले माँ बाप को पता भी नहीं था, क्योंकि महिलाएं जंगल में लकड़ी लेने जाए रहती है, कभी बाजार आए रहती है, कभी कोई रास्ते से उठा के ले आते हैं। और 10 दिन 20 दिन उनके माता पिता को पता नहीं रहता है, किसी महिला को साल भर पता नहीं रहता है कि उसकी बेटी उसकी लड़की कहाँ चली गई। तो वो ढूंढने में तब तक परिवार जेल के अंदर आता नहीं है, तो वो कैसे करेगी, किस तरह से वहाँ पे है, ना तो डाइट अच्छा दिया जाता है, ना उस दवाई अच्छा दिया जाता है, कुछ भी ऐसा नहीं है जेल। मैंने खुद मैं जेल में रह के मैं खुद इतना परेशानियों का सामना करना पड़ा। मुझे खुद को ये मेडिकल की जरूरत थी, मतलब दवाइयों की जरूरत थी, दवाई मुझे ठीक से नहीं दिया जाता। पर जब हम लड़ते थे तो हमको गुस्से के मारे एक दिन में मतलब एक टाइम में 12 टैबलेट खिलाते, दिन भर में 2 टाइम का 24 टैबलेट ऐसे खिला के हमको एक मानसिक स्थिति मतलब इस तरह से टॉर्चर किया। और महिलाओं को नंगा निवास करके उसको मानसिक रूप से उसको परेशान करना, ये सब करना। ऐसे महिलाएं छत्तीसगढ़ की जेल में थे जिनके साथ करंट मतलब उनकी चेस्टों में करंट के दाग कर दिया गया था, बलात्कार किया गया था, उनके निपलों को काटा गया था। इन तरह की महिलाओं को घर के लाया जाता है जेल, और जेल में भी उससे ज्यादा मानसिक रूप से परेशान किया जाता है। जब वो महिलाएं जब निकल के चले भी जाती हैं तो वो अपनी जिंदगी किस तरह से जीती है। मतलब ये महिलाओं का ही नहीं है, वहाँ की युवा पीढ़ी मतलब पुरुषों का भी ये जाता है, पुरुषों को करंट शॉर्ट कर दिया लाया जाता है, और करंट शॉर्ट देने के बाद वहाँ जो स्थिति है हो जाती है कि उनको दवाई नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता सब, तो कभी खून से कभी की कारण बता उसकी डेथ हो जाती है। तो डेथ होने के बाद भी कभी 7 साल बाद उसका परिवार पता नहीं रहता। मेरे ही मतलब मैं जब जगदलपुर जेल में थी उस समय एक ऐसे बंदी की डेथ हुई, डेथ होने के बाद उसको कुत्ते की तरह फेंकने के लिए जेल वाले ने मजबूर कर दी। तो अब सब महिलाएं मिलकर लड़ने लगे, ये कहने लगे कि आप इनको क्यों इस तरह कुत्ते की तरह फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। अब सब हैं इस वजह जितने भी जेल में जो बंद ये हमारा भाई है, ये हम उनके परिवार वाले हैं, हम इनके बहन इनकी दीदियां सब है, हम इनके अंतिम संस्कार अच्छे से करें। तो बोले नहीं, तो महिलाएं मिलके ही लड़े थी। उसके बाद बोले देखते हैं कि अंतिम संस्कार अगर मान सम्मान से अगर ऐसा करना है, लो इस मास को आपको देते हैं, आपको इसका डेड बॉडी को कैसे उठा के अंतिम संस्कार करवाते, जेल से तो बाहर जाने नहीं दे। तो हम लोग इतने ही मांगे कि आप कम से कम डेड बॉडी को हमको कफन तो उड़ाने दीजिए। तो बोले कपड़ा कहाँ से लाओगे, कैसे करके लाओ। फिर हम सब महिला ने सोचा कि सही बात है, इस डेड बॉडी के लिए हम कफन कहाँ से लाए। तो पता है
पूरी महिलाएं ने अपने दुपट्टे, साड़ी, अपने पहनने वाले जहाँ तक की मुसाया तो फटे कपड़े में फटा हुआ कपड़ा को भी जोड़ के उसको कवर बना के उसको कपड़े को फोड़ा के फिर उस डेड बॉडी को हम लोग बाहर निकलवाए। ये महिलाएं ने वहाँ का संघर्ष किया, तो महिला वहाँ संघर्ष कर पाती और पुरुषों के साथ बहुत ही बुरा हाल। अभी वर्तमान में जो भी वहाँ पर अगर इस तरह की लड़ाई करने की कोशिश करता है उनको पूरी तरह पीटा जाता है। और आज जैसे लीलाराम कोड़पी है, संतोष जो है वो भी जेल वो पत्रकार थे, उन्होंने इसी जेल के बारे में लड़ाई किया कि इस तरह की खाना क्यों दिया जाता है, जनता जैसा खाना क्यों मिलता है हमको, हमको सही खाना दिया जाए, भले हमको जेल लाया गया, हम रहने को तैयार है कि हमारा डाइट सही होना चाहिए जिससे हम स्वास्थ्य को अच्छा बना के रख सके। उसने जब लड़ाई चाल के उसको डंडों से पीटा गया। आज वो तो संतोष तो पूरा डिप्रेशन टाइप के बातें करता है, उसके रिजल्ट इतनी छोटे आई है। लीला कोड़पी का हो गया है, उसको तेरे से डंडे डाल के उसको डंडे डाला गया जिससे उसके नस फटे हुए हैं। तो ये स्थिति है, जेल से बाहर निकलने के बाद भी हमारे साथी आज भी ये संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी जो केस है पूरी आप सब तक पूरे देश तक फैला हुआ था और HRLN भी लिया हुआ था, जिसके कारण मेरे केस में जब मैंने फाइट चालू किया जेल में तो उस समय मुझे पिटा नहीं जाता था, लेकिन मुझे मानसिक रूप से विवश करके मतलब देखो एक एक दो दो घंटा रखा जाता था। फिर हमारे अंगों से वहाँ की जो कर्मचारी है उससे चलवाया जाता था, अपने अंगों से छेड़छाड़ करवाया जाता था। वो इसलिए करते थे क्योंकि ये मानसिक रूप से डिप्रेशन में चले जाए। वही ने उसके बाद मुझे ये भी कहा गया कि सोनी पागल हो चुकी है, तो इसलिए डॉक्टर की टीम भी आई। डॉक्टर की टीम और जेल के अंदर आके मुझे मेरा मतलब इलाज करने के लिए बुलाया गया। तो किसी तरह से HRLN को पता था, कॉलेज सर को पता था, तो इन्होंने बोला एक बार ऐसे ट्रीटमेंट किया जाए, वो कोई पागल होगा नहीं है। तो वहाँ का जो जेलर थोड़ा बहुत ठीक थे, तो बोले सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि बाहर से टीम तुम्हारे लिए आ रही है तुम्हारा इलाज करने के लिए, अब ऊपर वाली के ऊपर छोड़ो तो उनको क्या होता है, अगर तुम पागल की करार दिया गया तो तुमको जेल से बाहर जाना पड़ेगा, पागल खाना में भर्ती कराना पड़ेगा। तो बताइए मुझे कैसा लगा? सर मैं पागल नहीं हूँ, मुझे मैं पागल कराकर क्यों बोल रहे हैं? तो बोले मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वो सरकार कह रही है, सरकार अपनी टीम बना के दे रही। लेकिन आई थी, आने के बाद वो मुझसे पूछते हैं कि 2 गुना 2 कितना होता है और दिन में कितने दिन मतलब एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, और इस तरह से मुझसे सवाल करने लगे। और एक और बोला जा रहा था कि अगर कोई लेटर अगर रास्ते में पड़ी है तो उसको आप कहाँ डालोगे? तो मैंने कहा कि रास्ते में लेटर है तो उसको किसी बॉक्स में डालूंगी या कोई जान पहचान है उसका पोस्ट ऑफिस में पहुंचाने की कोशिश करूंगी। पहले लेटर किस चीज की लेटर हो तो देखो, उसके बाद बोलने लगे अगर घर में कोई अगर गांव में या कहीं मतलब कहीं घर में आग लगी तो आप क्या करोगे? तो मैंने उनको ये जवाब दिया पहले परिस्थिति देखूंगी, वो आग जंगल में लगी है या कहीं घर में ऐसी जगह पे लगी है, परिस्थिति देख के बुझाने की कोशिश करवाया जाएगा, उसको फिर मदद मांगूंगी। ये मैंने कहा। मैं लास्ट में मैं रोते हुए बोली आप लोग जिस तरह से मुझे ये समझ के आए मैं कोई पागल नहीं हूँ, आप लोग क्या सोच मुझे इस तरह के सवाल पूछ रहे हो, मेरे साथ क्या हो वो आप सुनिए। फिर मैंने अपनी पूरी दास्तान बताई कि मेरे साथ मतलब अरेस्ट करने से पहले पुलिस ने क्या क्या प्रताड़ना किया। तो तब उसमें मैडम भी थी और एक जेंट्स भी थे, एक टीम बन गए। तो मैं उन्हीं से पूछा मैडम अगर आपके साथ करंट शॉट किया जाए आपको कैसा लगे, या आपकी गुप्तवां में पकड़ डाला जाएगा आपको कैसे लगेगा? अगर इस चीज के लिए मैं आवाज पूरे देश को बता रही हूँ, सबको बता रही मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं अपनी राय के लिए लड़ना चाहती हूँ, तो क्या इसके लिए मैं पागल हो सकती हूँ क्या? मैं पागल हूँ क्या? तब उन्होंने बोला नहीं ये पागल है, उसने अपना मतलब उस स्कीम में लिख दिया कि सॉरी कोई पागल नहीं है, लेकिन इसकी जो इस तरह की यातनाएं किया गया उस यातना की वजह से ये आक्रोश पे आ जाती है, ऐसा उन्होंने लिखा। तो मैं पागल होने से बच गई। तो वो इसका कारण रहता है कि क्योंकि मेरा पूरा सुप्रीम कोर्ट से लेके पूरी वकीलों का उस पर फोकस था, तो इन्होंने मुझे मारने के बजाय मुझे मानसिक टॉर्चर करना चालू किए। वो भी बाद में इस तरह से ज्यादा ही सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से सब चीज होने से उसमें भी ज्यादा मेरे ऊपर नहीं आता था। लेकिन ये फायदा जरूर हुआ है, मेरे लिए बात इतना ऑर्डर हो गया था कि मुझे सुबह से शाम, सुबह का टाइम में चेकअप किया जाता था, शाम के समय में चेकअप किया जाता। तो कहीं ना कहीं वकीलों की इतनी ताकत के कारण मैं सुरक्षित बाहर रहने लगी। मैं 2.5 महीने की हड़ताल भी हम लोग ने किया। अब वहाँ महिला क्योंकि खाने के इतना बुरा खाना था, अब जब हम लोग खाने के लिए बैठते थे तो कुछ रहे तो थोड़ी सी चावल में इतने सारे कीड़े आ जाते थे, उन कीड़ों को निकाल के बाहर रख के खाया। फिर मेरे को कई बंदी लोग बोलते थे देखो दीदी जीना है तो खाना तो पड़ेगा, मरना तो नहीं है ना, मरना है नहीं खाएंगे मर जाएंगे,
लेकिन जिंदगी जीना है, अपने आप को बचाना है, ये कीड़ा को भी खाना है और चावल करके खा लेना पड़ेगा। वो दाल में इतने कीड़े होते थे, पूरे तैरते रहते थे लंबे लंबे कीड़े। तो मैं बोलती थी इसको कैसे खाएंगे, नहीं होगा खाना, नहीं दीदी खाना तो पड़ेगा। अब तो सालों साल खा रहे हैं, आप आगे 4-5 महीना होगा बोल रहे नहीं खाऊंगी तो नहीं होगा, तो इसके लिए कुछ तो किया जाना चाहिए। फिर मैं पूरे बंदियों से बात की, मैं बोली देखिए अगर सरकार हमारे साथ अत्याचार कर रही है, जेल विभाग हमारे साथ अत्याचार, हम लड़ेंगे, मगर नहीं लड़ेंगे तो लोग तो हम लोग के साथ ऐसी कुचल करेंगे। फिर हम लोग ने महिलाओं के साथ हम लोग भूख हड़ताल चालू की। भूख हड़ताल में पूरी जो दाल जब आई थी हमारे मतलब वहाँ पे जेल में जो महिला विंग में, तो पूरी दाल को दाल की पानी मिला के आधा मग्गा कीड़े को लेके हम लोग अधीक्षक के पास गए। अधीक्षक कहता है कि ये क्या होते हैं, कहते कि ये कीड़ा है। फिर भी अधीक्षक का ये कहना था ये कीड़ा नहीं है, वो ऐसे ही थोड़ा दाल में छोटे छोटे थोड़ा से आवाज आते हैं, वो शायद साफ नहीं करता। मैं कीड़ा है सर, आप अच्छे से देख लीजिए, आप देखिए तो सही है कीड़ा कैसे नहीं। तो बोलते ठीक है मैं पी के देखता हूँ, वो तो कीड़ा था, तो वो अंदर भी नहीं पूरा पाएगा तो तुमने लगे। तो हम बोले सर हम तो रोज इसको खा रहे हैं। तो बोलते देखो मैं पिया मरा तो नहीं ना, मरता कौन है सर, कीड़े का कोई मरता है, आप ये बताने के लिए आप ऐसे भोजन क्यों दे रहे हैं हम लोग, किस लिए इस तरह परेशान कर। एक तो कोर्ट में अलग अलग केसेस नहीं चलती है, लेकिन ये सब होने का कारण मुझे ये लगता है अगर हर बंदी थे वकील अगर अच्छा हो, क्योंकि वकील और बंदी का एक ऐसा रिश्ता होता है, वो तो बंदी तो वकील को बताएगी ना कि जेल में क्या हो, उस बेसिस पे अगर वकील कोर्ट में अगर लगा ले तो उसको जरूर राहत मिलता है। क्योंकि मेरे साथ यही हुआ, जब रोटी अच्छा नहीं मिलता तो मैं पैक करके बोले कहाँ ले जा रही है पैक कर, मैं बोले कोर्ट ले जा, क्यों ले जा रही है कोर्ट, इसलिए ले जा रही है कि कोर्ट आप बताएंगे ठीक है जैसा आप अगर हमको डिमांड रखे हैं तो क्या इसलिए डिमांड रखे हैं कि इस तरह की रोटी खाने के मजबूर करने के, नहीं कोर्ट मत जाओ, उनको पता था इसलिए वकील बहुत तेज है। इनके वकील अगर कोर्ट तक लेके जाएंगे तो वो पूरा मजिस्ट्रेट का केस करेंगे, हालांकि हर मजिस्ट्रेट नहीं सुनता लेकिन कुछ हद तक मजिस्ट्रेट सुनते थे। तो ये मतलब वकील का ये ताकत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बंदी और वकील की बहुत बड़ी। कोई मेडिकल के लिए भी अगर इलाज के लिए होता बीमार पड़ जाता है तो आपको तो पता है, तो हम बताते हैं कुछ वकीलों को कि नहीं वो बीमार है आप मेडिकल की लगाइए, ये भी नहीं लगाया जाता। ये इस तरह से नहीं करने से वो व्यक्ति बीमार पड़ के जेल के अंदर मर जाता है, मरने के बाद उसकी डेड बॉडी दी जाती है। हर बार ये बताया जाता है खून की कमी ये कमी, तो कहीं ना कहीं अगर उसका वकील अगर उसको ये साथ दे देते हैं कि वो मेडिकल लगा उसको बाहर निकाल के इलाज करवा देते शायद वो बच जाता, पर ऐसा नहीं होता है। जो लीगल जो वकील है वो वकीलों का यह है कि वो तो सिर्फ एक पैसे के लिए वो करता है, पैसे इतने बार लिया जाता है छत्तीसगढ़ में। अभी तो HRLN भी है, HRLN के वकील भी हैं, लेकिन वहाँ इतने सारे केसेस हैं कि हमारे वकील के अलावा भी और भी वकील के पास चला जा रहा है, तो वो हमको बताते हैं कि मैडम आपको इतना फीस दिए हैं, मान के चलो 8 साल से बेचारा कर रहे हैं, लेकिन 8 साल के हर पल जब भी उसका परिवार आएगा वो उससे वसूली और वकील अपना पैसे लेता है, वो अपनी जान दे रहा है, जमीन दे रहा है, जो गाय बकरी हैं जिससे उनका मतलब जीवन यापन करना है, वो सारी संपत्ति को बेच के उस वकील के जेब में पैसे देने के बावजूद भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जिंदा भी नहीं रहता, वो मर जाता, तो उसकी संपत्ति भी गई, उसका जो जेल के अंदर है वो व्यक्ति भी गुजर गया। ये सब का सामना करना पड़ता है। एक जैसा मतलब ये उनका नाम का जो व्यक्ति है अभी जेल के अंदर है, आप पता है उसके वो जब वो कुछ भी नहीं किया था, वो तो गांव में अपनी बच्ची को लेके बीमार बच्ची को लेके गोद में पकड़ के ऐसे बैठा हुआ था। अब उसको पुलिस गई और चारों तरफ से जाके उसको पकड़ ली, उसकी बेटी बोल भी रहती कि ये मेरे पिताजी को कहाँ है गोदी में, तो बोलते हैं कि उसको धक्का मारे, बोले तुम्हारे पापा नक्सलवाद है हम लेके जा रहे, तो उसको नक्सलाइट नहीं समझ में आया, छोटी सी बच्ची थी, तो तब तक उसकी माँ ने देखी, उसकी माँ दूरी देती वो पेड़ से नहीं, तो वो पेड़ में रही है, वो भी चिल्लाते हुए है। आज एक महिला उसको क्या किए पुलिस ने उसको धक्का मारा, वो पेड़ से गिर गई है। तो दूसरी बात फिर वो तो पति है ना, मेरा पति कुछ नहीं किया आपको क्यों पकड़ के ले जा, ये कह के पीछा करने लगी, तब तक बंदूक के बट पे उसको एक पुलिस वाला ने मार दिया, उसको बट यहाँ पेड़ में लगाया, उसका पेट ऐसी भी होकर क्षमा बनने वाली। उस समय का उसका दर्द को पकड़ के इस महिला ने कोर्ट से लेके थाने से लेके जेल तक घूमती रही, मतलब उसको 2 दिन अपने पति को ढूंढते रही, लेकिन पुलिस कहीं से भी नहीं बताया कि तुम्हारे पति को आप इस अपराध में अरेस्ट करके ले जा रहे हैं, आप या पुलिस थाने में आई है या कोर्ट में, ये नहीं बोला, गाड़ी में जबरदस्त डाले और उसको लेके आ गए। आने के बाद 2 दिन तक ढूंढी उस पेट के दर्द, उसके बाद दर्द सह नहीं पाई, घर गई, बच्चे को जन्म दिया, वो समय से पहले जन्म दिया,
जन्म लेने के बाद 3 दिन बाद फिर छोटा सा बच्चा को लेके फिर कोर्ट में घूम रही है, थाने में घूम रही है, जेल में घूम रही है, मेरा पति जिंदा है भी या मार दिया गया। क्योंकि अक्सर छत्तीसगढ़ में पकड़ने के बाद एनकाउंटर किया जाता है। जैसे पकड़ लेते हैं कोई जंगल में ले जाके एनकाउंटर करके बताते हैं कि माओवादी, तो उस बात का डर बस फैला। तो वो इसका सामना कर रहे बच्चे को लेके वो कोर्ट और ये सब से दौड़, फिर उसको किसी तरह मेरा संपर्क हुआ, मेरा फोन मेरे शुरू से फोन करके बोली कि मेरे साथ दीजिए, ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ तो फिर मैं गई। आने जाने के बाद उसको मैं उसी तरह ढूंढने की कोशिश की। अंत में उनका उसका जो पति था जेल में उनको मिला। जेल में जबकि डाल चुके थे लेकिन उस औरत को निकाले गए। फिर उंगा को बाहर निकाले, मतलब मिलने की जैसी उनकी मुलाकात करवाया गया। तो तब वो उंगा को ये नहीं पता था मेरी बीवी एक बच्चे को जन्म दी। अब वो रोने लगा, कहने लगा कि मतलब कि मेरे को कब निकालोगे। उसके बाद लास्ट मुझे ये याद है, उसकी पत्नी उससे लास्ट बार मिली। उनका ये बोला रहा कि देखो हम लोग जो घर बना रहे थे उस घर में कुछ भी ऐसे तार जाड़ होता है, कुछ भी उसको मतलब दीवार को बचाने में कुछ आप उसको रोक रही है, लेकिन बार बार आके पैसे खर्च मत करना। और मुझसे कहता दीदी आप मुझे जेल से जब भी होगा निकालोगे ना, तो हम लोग वकील लगा के आपको कोशिश करें निकालें। तो मैंने उनको कहा देखो तुमको बेटा हुआ, तुम अपनी पत्नी या बच्चे को देखिए हंस तो दो। उस बेचारा ने हंसा। फिर उसकी पत्नी को मैं वापस ले जाके गांव छोड़ी। छोड़ने के 4 दिन बाद मुझे ये खबर आया कि उसकी पत्नी बहुत सीरियस हो, क्योंकि इन्फेक्शन हो गया था उस बच्चे को। इन्फेक्शन होकर 3 दिन कोमे की तरह अस्पताल में जूझती रही। और अंत में जब मैं उससे ये पूछी कि ये बता हुए तो क्या चाहती है, तो अपने पति को देखना चाहती है, तो वो मुड़ी हिला, क्योंकि बात करने योग्य नहीं थी। वो पूरा इन्फेक्शन हो गया था, उसकी पूरी मतलब शरीर का खून भी काला पड़ गया था। जब हम डॉक्टर से पूछे बोले कि ये कोई इन्फेक्शन हो गया, और उन्होंने उस बच्चे को दूध पिला दी तो बच्चे का और भी पूरा काला हो गया था। फिर हम लोग बच्चे को दूध नहीं पिलाया, उसको साइड रखे और उन्हें से लास्ट समय में पूछी तो मुड़ी हिला के बोली कि हाँ मैं पति को देखना चाहती। तब से मैं ये काम की क्यों ना इसके पति को कैसे भी मैं मिलवा। उसके बाद हम वकील भी लगाए। वकील के बाद वकील को जाके कोर्ट में बताया कि आप उनके लिए एक बार मुलाकात के लिए उसके पति को जेल से कम 4-5 घंटा के अपने पति को मिलने के लिए आएगा, आप आवेदन लगा दीजिए। आवेदन लगा दी, तब तक मुझे मर चुकी थी। मरने के बाद भी मेरे मन ये लगा कि नहीं इस बेचारी ने कि ये कहते मरी है तो इसका पति अंतिम संस्कार के लिए कम से कम मुझे के पास जाए। तो उसके लिए फिर हमारे वकील ने बहुत उसमें फाइट किया और मिला भी। वो मजिस्ट्रेट ने दिया कि इसको 5 बजे तक 5:30 बजे तक इसको अपनी पत्नी के मतलब 10 बजे से लेके जाओ गाँव और 5:30 बजे के पहले लाके मतलब इसको जेल में दाखिल कराओ। ये ऑर्डर हो गया। उसके बाद पुलिस ने क्या किया, मुझे बहुत खुशी हुई, कम से कम मुझे जीते थी तो कम से कम मरने के बाद वो अंतिम संस्कार उसका पति करने जाएगा। उंगला को कैसे बांध के पूरी जंजीरों में बांध के गाँव में लेके इतनी जंजीरों बांध के गए, दोनों हाथों से जंजीर बांध दिया गया। और उसके बाद उंगला के ऑलरेडी 2 बच्चे थे और उसकी पत्नी के पास ले जाके पुलिस क्या बोलती है यही है ना तुम्हारी पत्नी, यही है कि नहीं है। उंगला अपनी पत्नी को छूने के लिए तरस गया लेकिन जंजीर नहीं खोला गया। जंजीर की तो मैं नहीं लगा कि ये अभी तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया 3 बजे के बाद जाएंगे अंतिम संस्कार कर उसको करवा लेगा, उंगला वापस आएगा। हम गाँव नहीं पहुंचे, तुमको पता था कि सोई आ जाएगी। उन्होंने क्या किया कि उसके जंजीर बांध के ले समय से पहले और उसके बाद उंगला को छूने नहीं दिया गया और उसके बच्चे उंगला को पूरे पैरों में पकड़े लेकिन उंगला अपने बच्चों को छूने नहीं, दोनों तरफ से जंजीरों में पुलिस उसको कस के बांध कर रखी थी। और उसके बाद उन्होंने क्या किया 2-4 पटाखा फोड़ दिए और क्या बोलने लगे नक्सलवादी आ गए हैं, मुठभेड़ चल रहा है, इसलिए इसको जल्दी ले जाना है वापस जेल। उसको वापस जेल अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार भी करने नहीं दिए और उसको गाड़ी में डाल के जेल में लाके दाखिला कर दी। तो ये कोर्ट का ऑर्डर के बावजूद भी पुलिस इस हद तक गाँव उतरती है। उसके बाद फिर रजनी सुरन ने उस बच्चे को कैसे बचा, माँ को तो नहीं बचा पाए, अब बच्चे के बारे में सोचने लगी। वो HRLN से वो भी कर रहे हैं रजनी सुरन, उनको मैंने बताया। फिर उन्होंने आवेदन फाइल किया। फाइल करने के बाद कलेक्टर से कुछ पैसे मिले और उस बच्चे के लिए हर महीना उनका दूध जाने लगा। आज वो बच्चा जिंदा है, मतलब आज वो बच्चा कब से अभी 1.5 साल का हो गया है। तो आज वो बच्चे को हम लोग भले मतलब जिंदा हो बच गया लेकिन उसकी माँ को नहीं बचा पाए। ये मतलब हमारे छत्तीसगढ़ की जेलों की ये स्थिति है। अगर वहाँ वकील अगर सही मायने में अगर सही समय पे हर चीज को अगर आवेदन डाले या इस तरह से फाइट करे तो बहुत चीज अच्छा हो सकता है। सबसे बुरा हाल देखा जाए जेल की है।
अब जेल जाने से पहले इतनी टॉर्चर किया जाता है, जेल में लाने के बाद इतनी टॉर्चर होता है। कई लोग तो जेल से बाहर जाने के बाद मर जाते हैं, जिंदा भी नहीं रहते, क्योंकि वो कोई काम के लायक ही नहीं रहते हैं। उनको बाद में कहा जाता है कि नहीं, उनको तो बाइज्जत किया। जितने भी नक्सल केस है, माओवादी केस है, जिन आदिवासियों को उनको नाम और खिलाते हैं, लेकिन अंत तक वो आदिवासी लोग मतलब बाइज्जत किया हो जाते हैं और उनके ऊपर कोई केस नहीं। लेकिन वो रिहाई किस काम की? जो रिहाई 7 साल बाद रिहा कर रहे हो, 8 साल बाद रिहा कर रहे हो, 4 साल, एक प्रकार की तो सजा ही ना। अगर ऐसा नियम क्यों नहीं है कि इन बच्चों को 2 साल या 3 साल के अंदर ही उनकी कार्रवाई हो और उसको निकाला जाए? लेकिन नहीं, इतनी धीमी गति से उसका वो कार्रवाई होता है, तो 8-8 साल एक प्रकार का सजा है और उसके बाद ये बताते हैं तो बाइज्जत किया हुआ। उसके बाद और उस केस को वापस लड़ने के लिए भी लीगल एड जो काम करते हैं वकीलों को मैं ये बोलती हूँ, सर आप लोग एक काम तो कर दीजिए, नीचे में आकर आप बहस करते हो, अच्छे से क्रॉस कर दीजिए ताकि इसके लिए आगे अगर बाइज्जत किया हो जाता है, आगे जाके इसके लिए अच्छा हो जाए। ये हम कर सकते हैं कि नीचे का बहस अच्छा हो तो हाईकोर्ट में जाके महारानी का दावा, इसका 8 साल का जो जीवन बर्बाद हुआ, 8 साल में जो तकलीफ झेला, उसके लिए हम फाइल कर सकते हैं। उस लायक भी बहस नहीं रहती है। हम हाईकोर्ट में जाए तो कैसे जाए? मतलब बस उनको ये लगता है कि बस थोड़े बहुत ये फाइल पे डिस्कस करना है, निकलना। हमको मालूम है कि ये तो ऐसी पुलिस उठा के लाई है कि इनको छुटना है, तो कोई भी ढंग की बहस वहां नहीं होती। अब ईड में जो लड़की थी, वो ईड में वो 8 साल बाद वो रिहा हुई। वो 8 साल के पहले उस लड़की को 15 दिन रखा गया अपनी कस्टडी में, पुलिस ने जेल नहीं लाने से पहले 15 दिन कस्टडी में रख, इतनी बुरी तरह से मारे, इतना बुरी तरह से पीटे। उसका तो रीढ़ की हड्डी में भी आदमी करप्ट है, मतलब उसका रीढ़ की हड्डी तो गेप हो गया, फिर डंडों से मारा गया और 2 दिन के अंदर उनको तो ऐसे बलात्कार किया गया, उनका एड्रेस बाहर आ गया, उसकी पूरी ये चीज बाहर निकल चुकी थी। उसके बाद उसको जेल में डाल दिया। जेल डालने के बाद हम लोग सबके लड़े तो उसको इलाज हुआ, लेकिन आज वो लड़की किसी काम की नहीं। वो लड़की थी कितने साल, 16-17 साल की थी और 8 साल बाद बाहर निकली है। निकली तो पूरी तरह उसकी जो बॉडी है, उसका शरीर है, वो तो पूरी तरह की बीमारी का जड़ बन गया। तो अब कुछ नहीं कर सकती, वो कुछ एडवांस भी नहीं कर सकती। अब पता है इस लड़की का जिंदगी का क्या। लेकिन ये केस तो बनता है ना कि जिस सरकार ने इतने साल रखा, वो लड़की बाइज्जत किया होती है, उसका पूरे शरीर की बॉडी हालत तक पुलिस कर देती है। इसलिए तो आप केस लड़ने के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन उसको इसलिए हम लोग भी कुछ नहीं कर पाते। नीचे इस तरह में कोई ढंग की बहस नहीं होती। मतलब ये वहाँ हमारे जो छत्तीसगढ़ की ऐसी स्थिति है। और यही नहीं, पुरुषों में भी वही है, इतनी मारपीट। जैसे मेरे पति थे, मेरे पति भी जेल में थे, मैं भी जेल में थी और मुझे बहुत टॉर्चर करके देखे। जब उनको लगा किया और तभी तब से मस नहीं होगी, अपने आप में मजबूत की तरह खड़ी है, इसको कुछ नहीं किया जा सकता। तो मेरे पति को टॉर्चर करने लगे, उनको पैसे का लालच देना और जेल से होने का लालच देना। तो उसकी और मेरे बीच में काफी लड़ाई होगी कि वो ये कहने लगे कि नहीं तुम सूती नहीं हो, हम जल्दी से जेल से बाहर जाना है, ये जो सौदा कर उसको मंजूर, उसके लिए तुम तैयार हो जाओ, हमारे बच्चे के पास जाना है, हम अपने बच्चे के पास चले जाएंगे, तो ये जो सौदा कर रहे हैं उस सौदा को आप मान ले। ये मेरे पति ने, तो उस मेरे पति को मैंने यही कहा, जो चीज मैंने खोया वापस आए देते। जिन्होंने मेरे साथ इतना अत्याचार किया, जिन सरकार ने मेरे साथ इतना कुछ किया, वो वापस आए करके। आपको ऐसा लगता है कि मेरे पति के साथ इतना गलत किया गया, इतना अन्याय किया गया, इस तरह की गंदे ढंग से ये पकड़े डाल के साथ ये किया गया, आपको शर्मिंदगी की लगती है, एक पल के लिए आप मुझे छोड़ दो, लेकिन मैं अपनी फाइट नहीं छोड़ूंगी। मैं अपनी लड़ाई को हार, क्योंकि ये लड़ाई मेरी तरह और भी लड़कियों के साथ हो रहा था, इसलिए मैं बता। उसके बाद मेरे पति को इतना मारपीट किया गया और टेररिस्ट के रूप में जेल से बाहर आए। आने के बाद अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। भर्ती करने के बाद एक दिन बड़े मुश्किल से मैंने बहुत रिक्वेस्ट की जेल अधीक्षक से, सबसे एक बार मेरे पति से मिला, तब जब मैं अपने पति से मिली तब मेरे पति रोते हुए बोलते हैं तुम सही थी, मैं गलत था, मैं इनकी बातों पे आ गया था, देखो मेरा क्या हाल है। जबकि मेरे पति उठ नहीं सकते थे, लेकिन उनके बड़े बड़े जंजीरों में बांध के बेड में रखा। वो मुझे जब मैं गई तो मुझे बोलते हैं सोनी मुझे भूख लग रहा है, मुझे तुम खाना दो। मैं कहाँ से उनके लिए खाना ला, कहाँ से मैं खाना उनके लिए लेके जाती। वो मुझसे बोल रहे थे कि मेरे लिए तो खाना दे, मुझे भूख लग रहा है। ये लोग मुझे खाना नहीं दे रहे हैं, मुझे भूखे रखे, फिर भी मैं वहां पर लड़ती रही। सर आप इनको क्यों जगह लगा के रखे, वो उठ नहीं सकता है, वो तो अगला हो चुका है, इतनी पीट दी हो और उसके बाद खाना भी नहीं देते। नहीं मैडम हम देते हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। वो बोलने लगे इससे मत लड़ना, फिर तू चले जाएगी, हम लोग फिर मारेंगे, ये लोग मार डालेंगे। अंत में वही हुआ,
मेरे पति को हम कुछ नहीं कर पाए, फिर मैं देख के आती हूँ तो लाचार क्या कर सकती कि मैं भी जेल फैसिलिटी में रहती। अगर उस दौरान लगता है मुझे कि अगर वहाँ हमारा कोई वकील रहता, इस तरह से रहता, वो वकील आपको बीच बीच में संपर्क करते तो शायद हो सकता था हम उसको बता के हमारे पति के लिए कुछ कर सकते। लेकिन मेरे वकील तो यहाँ पे थे, मतलब हमेशा HRLN से कभी कभी जाते थे, पर अब कल नहीं जा पाते, तो वो खबर नहीं यहाँ तक पहुँचा नहीं पाई जो जिस तरह। उसके बाद मेरे पति लास्ट में जब वो बाइज्जत रिहा भी हो गए, 3 साल का जेल में, उसके बाद रिहा होने के भी जंजीर में डाल के मेरे को वो मेरे पति बोले लास्ट समय मेरे पति को मिलने दो, अब तो मैं रिहा हो गया हूँ साहब, एक बार मिला। तो एक बार जब मिलाने के लिए मिलाए तभी क्या की, तभी जाली में रख के मेरे पति को साइड रख के मैं इस साइड रख के वो एक बोलते रहे कि मैं एक बार अपने पति को छूना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, उसको आग कर पकड़ के पूछना चाहता हूँ, एक बार वो कैसे, एक बार तो रिहा होकर जा रहा हूँ, लेकिन नहीं दी। मेरे पति होते रहे और हम भी होते रहे और मेरे पति को गाड़ी में डाल के घर में ले जाके पटक दी। तो मेरे ससुराल वाले बोले कि मेरा भाई अच्छा खासा था, जेल में गया, आज इसको ये मरे आदमी क्यों लेके आए, ये मुर्दा को क्यों लाए, हम नहीं रखेंगे, वापस ले जाओ। तो उसके बाद मेरे जब देवर ने इस तरह का विरोध करने से, मेरी बेटी छोटी सी थी, मेरी बेटी को पुलिस वाले ने साइन करवा लिया और मेरी बेटी का अपडेट कर दिया, और उसके बाद मेरी बेटी क्या उसको बहस करती, उसके बाद क्या कर रह गए और मेरे 2 महीना तक जिंदा रहे और अंत में मेरा नाम करते रहे, चिल्लाते रहे, एक बार मेरे पति को मेरे से मिलवा, लेकिन नहीं ना, मैं उनसे कभी भी ना रहे और वो मर चुकी, वो मतलब मर गए। तो ये हालत है छत्तीसगढ़ का। और जबकि उसके बाद आज भी देखिए कि ये चीज मेरे साथ हो रहा है, इसलिए मैं फिल्म के साथ और लोगों के साथ जो होता है तो मुझे बहुत दर्द होता है, तो मैं इसलिए उनके लिए आगे आती हूँ, क्योंकि मेरा तो कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं आप लोगों के लिए हम काम करूँ। ये है कि HRLN से जुड़ के और वकील या कुछ करके काफी चीज अब हो रही है वहाँ की जेल की स्थिति। अगर आप सब लोग अगर इस बात को सुन रहे हैं, ये कह रहे हैं, तो मैं आपसे ये कहूँगी मेरी तरह बहुत ही लाचार, बहुत ही विवश होगी, मजबूर होगी जेल के अंदर, उनके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि जो करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। अगर मैं बोलती हूँ कि हर पल अगर वकील उन पर ध्यान दिया जाए और बीच बीच में जैसे फैक्टर का बाहर का कर लेते हैं, लेकिन जेल के अंदर नहीं होता, जेल में आदमी किस तरह से मर रहा है कि जी रहा है उसका कोई वो नहीं। और जेल में 200 जगह 800 लोगों को भर दिए, वहाँ सोने के लिए जगह नहीं है, और जब सोने इधर से उधर में जाने से इधर में उड़ने की जगह नहीं, टॉयलेट के लिए एक रूम में 200 लोग एक टॉयलेट में वहाँ लाइन लगाना पड़ता है, एक दूसरे को मारा मारी करते हैं, पीटते हैं, और उसी में जो बंदियों की लड़ाई झगड़ा होती है। और वहाँ नहाने का सुविधा है, ना लेटरिन का सुविधा है, ना सोने का सुविधा है, ना खाने का सुविधा है, और फिर इस तरह से एक जेल में रख के एक प्रकार से पूरी तरह मानसिक वो प्रकार न देके लोगों को मार रहे हैं। और अस्पताल नहीं है, और अस्पताल की बात बोलो तो बोलते हैं तुम नेशनल वालों, तुमको क्या जरूरत है अस्पताल ले जाने की, तुमको तो बस ये रहना। तो ये एक तो वैसी बोली भाषा हमारे आदिवासी लोग नहीं जानते, ऊपर से उनकी पूरी जल्दी की जा रही है, ऊपर से वो खुद के शरीर पे इस तरह की उनके साथ तकलीफ का सामना कर रहा है। तो कहीं हमारे बंदी साथी पुरुष घर भी आए, छूट के घर आने के बाद ये होता है कि ये बोला जाता है कि भाई आप इतने साल तक घर में जेल में थे, हमने आपके नाम से जमीन बेच दिया, ये जो मुआवजा होता है मुआवजा, उससे कई चीजें हम सब साल भर के लिए बेचते हैं, साल भर के लिए उसके जब कॉल आता है उसको हमने बेच दिया। तो वो रोजाना ये बोले अब मजदूरी करके खिलाओ अपने बच्चों को, 4 बच्चे को मैं कैसे पालूं। तो ये भाई क्या किया, मैं कितना पत्नी की बात सुनूंगा, मैं परेशान हो गया। वो चला गया कहाँ, माओवादी के पास चला गया। माओवादी के पास चला जाने के बाद माओवादी की कैसे रखेगी, क्योंकि ऑलरेडी उसकी जो शरीर इतनी कमजोर है, कुछ करने लायक नहीं। उन्होंने भी बोला कि भाई आप हमारे पार्टी में जरूर शामिल हो, पर आप ऐसे ही बीमार हो, बीमारी से ग्रस्त हो, तो हम आपको भी कहाँ ले लेके घूमे। फिर वहां से परेशान होकर फिर वापस आया। वापस आने के बाद बोला कि कितने भी गाड़ी दो, कुछ भी दो, मैं कहाँ जाऊंगा, क्योंकि मेरा शरीर ऐसा लायक कर दिया गया है कि मैं मजदूरी नहीं कर सकता, हार्डवर्किंग नहीं कर सकता, थक जाता हूँ, मतलब मुझे चक्कर आता, मैं क्या करूँ। फिर से आई पुलिस, उसको उठा के ले गया जेल में। अब वो जिंदा तो शायद हो गया, उसकी पत्नी मैं जुड़ा नहीं मिला, मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं क्या करूँ। तो हालांकि हमारे 4 वकील अब लड़ रहे हैं, उसकी केसेस अभी और बचे हैं। तो ये ये इस तरह के कितने हमारे नौजवानों को ये किया जाता है, नौजवानों के साथ भी बोलिया जो जितना पढ़ने के नाम पे। अभी वर्तमान में यहाँ आ रही थी, मुझे कल पता चला एक टीचर को जेल में डाल दी। तो ये जेल का कुल मिला के व्यवस्था बहुत ही खराब है।
और हम बहुत गरीब से जेल को काटा है, जाना है, और इस तरह से हम इतना दे के जेल के अंदर मार रहे हैं। तो उसके लिए भी आप सबको मिलकर शायद कुछ करना चाहिए। आप अलग अलग जगहों से आए, अलग अलग से, जिसके लिए स्पेशली एक बैठक हो जाए कि अब जेल के बाहर के लिए तो वकीलों के इधर उधर करके उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो जेल के अंदर है, जो लड़ना चाहते हैं, जो हक मांगते हैं, खाना वो मांगने से क्या मांगते हैं, आपको सही खाना दो, आप रोज पेशी ले जाओ, रोज पेशी ले जाके लाओगे तभी तो छूटेंगे, ये सब डिमांड रहता है। उसके लिए उनको लाठीचार्ज किया जाता है, उनको मारपीट किया जाता है, दवाई इतना ज्यादा मात्रा में दवाई दिया जाता है। क्योंकि जब मैं बोलती थी ना कि सर आप मैडम आप कौन सा दवाई दे रहे हो, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, थोड़ा सा दिखाइए। अच्छा यहाँ पर तुम वो सिर्फ देखना चाहती, ये नियम में नहीं, वो पूरी दवाई को खोल दिया जाता है, कागज के पन्ने में रख के, अगर नहीं खाओ तो फिर 2-3 लोग पकड़ के मुंह में डाल के पानी को डाल दिया जाता है, अब खा बोझी वाली, ये रखना है। अगर एक माँ बच्चे के लिए खाना मांगती है तो उसको मारपीट किया जाता है, उसको गुना खाना में बंद किया जाता है। तो 15 अगस्त का दिन था जब मैं रायपुर जेल में थी, उस दिन सारे 15 अगस्त का तो अगल बगल गाना सुन रहे थे आजादी का। तो महिला ने बोला क्यों ना हम इतने खुशी के दिन है, क्यों आज तो कम से कम हम अच्छा खाना अच्छा मतलब सब्जी के साथ खा सकते हैं। तो क्योंकि जो जेल के जो बंदी है, जो कैदी होते हैं, वही लोग खाना बनाते हैं। हम कैदियों से उन महिलाओं से बोले आज का खाना तो अच्छा होना चाहिए, आज तो आज के दिन तो देश आजाद हुआ था ना, तो आज हमको खाने का तो अधिकार है, आप सूखी सब्जी बनाइए, दाल बनाइए। वो बना दी सूखी सब्जी दाल, जैसे जेलर आई उसके बाद उसकी ऐसा सब्जी किसने बनाया, तो बोला नहीं मैडम सब लोग मिल के हम लगा 15 अगस्त आज के दिन तो मैडम खाने दी। उसने 4 बाल्टी पानी डलवा दी, ये तुम लोग खाओगे, तुम लोग देखे भी हो ऐसा खाना तुम लोग खाओगे, क्या समझते, ये नहीं मिलेगा तुमको, ये खाना मिलेगा। 4 बाल्टी पानी डाल दी सब्जी में, पूरी महिलाएं अपने आप में रोते रहे। अब में क्या करते, वही बात है ना, जिंदगी जीना तो है, मरना नहीं है, तो वो चाहे पानी हो, चाहे कीड़े के खाना हो, चाहे दाल, उसको ला के तो खाना तो पड़ेगा। कई महिलाओं के साथ कपड़े नहीं मिलता है, वहाँ कपड़ा नहीं दिया जाता, 7 साल का उनके परिवार बहुत दूर रहते हैं, उसका सबक करना पड़ता है। तो कई महिला ने सोची है कि पैसे नहीं जाती, तो हम पूछते थे कि क्यों पैसे नहीं, आज बाहर जा रही कपड़ा नहीं, तो वो महिला बाहर जाने हो जाएगी तो सवाल उसके लिए तो कपड़ा चाहिए। अब जेल के अंदर में छोटा मोटा कपड़ा अपना पहन के रह जाते हैं, लेकिन अब बाहर जाएंगे ले जाए कोर्ट में क्या, तो ये है मतलब जेल का मतलब ट्रेडिशन कि उनको ना कपड़े मिलता है। तो जेल के बाद तो कपड़ा नहीं भी देगा, लेकिन मेरा कहना है कि उस परिवार जो जेल में बंद है उस तक भी जेल विभाग खबर पहुंचा सकता है, दबा सकते हैं, उनकी जानकारी दे सकते हैं कि तुम्हारी ये तुम्हारी बेटी है या बहन है या पत्नी है कि जेल पे है, आप लोग आइए मिलिए, मतलब ये वो करा जा सकता है, लेकिन नहीं वो भी नहीं किया जाता। कई महिलाएं जैसे शादी होगी 2 महीना 3 महीना हो जाते हैं, उनको लाके जेल में लाते हैं। लाने के बाद कई ऐसी महिलाएं हैं कि वो 8-8 साल रही, 5 साल से पति आके तो कब छूटेगी, तो छुटेगी भी नहीं, वो पति इंतजार करता है, वो पति नहीं 1 साल बाद छूटूंगी, 2 साल बाद छूटूंगी, 3 साल बाद छूटूंगी, ऐसे होकर लास्ट में बोलता है कब तक इंतजार करूंगा, तब वो महिलाएं बोलती है आप शादी कर लो, शायद आप नहीं छूटूंगी। तो उस समय अपने पति को बोल के आ जाती थी, लेकिन आज अंदर में बहुत होती थी। तो हम लोग पूछते थे क्यों रो रही, क्या करूंगी, मेरे पति आ जाके पूछे, मैंने ये जवाब दिया। अब मैं अगर जिंदा भी निकलती हूँ तो मेरा घर कहाँ है, मैं किसके पास जाऊँ। तो हम लोग बोलते थे कि समाज है, माँ बाप है उनके पास, लेकिन मेरी शादी हुई ना, मेरे पति तो दूसरी शादी करके अपना घर बसाए रहेंगे, अब मैं यहाँ से निकलूंगी कुछ चीजों में कैसे देख पाऊँ, इस अच्छा मेरा यहाँ मत जाना चाहिए। मतलब ये महिलाएं वहाँ पर कहती थी और सुनते थे। और कई मैंने बताया किस तरह से मानसिक सर्जन को पेड़ आते थे तो कैसे महिलाएं तो उसको जुटना पड़ता था, उसके लिए भी बहुत हम लोग बाद में लड़ाई किए, फिर भूख हड़ताल किए। उसके बाद यही न तब भी नहीं माने तो एक दिन खुद मेरे ही मैं खुद ऐसे मतलब मैंने हुई थी और मुझे कोर्ट ले गया, कोर्ट में मैं बोल रही हूँ कि मुझे पेड़ दिया जाए जो मेरा को ड्यूटी में लेके गया नहीं, अंत में क्या करेंगे, सरल लोग के अगर हम रह जाते तो शायद नहीं, हम क्या जेल के पास गए। उसके बाद बोले कि क्या हुआ सोनी, क्या हुआ सोनी, ऐसे पूछे। मैंने बोला सर मैंने अपने कपड़े उठाए, क्या करती, क्योंकि सबको हक दिलाना था, खुद के लिए भी जरूरत था। तो उसने देखा मैं बोले आपकी भी पत्नी, आपकी भी बेटी, आपकी भी बहन, ये एक महिला के साथ हर महीने का कंडीशन है, आपने यहाँ पेट में दिला रहे हो, आप ही सामना करना पड़ता है उनको, सोचिए अब कैसे जीविए और कैसे करेंगे। तो उस दिन मेरे को कोर्ट से लगभग 8 बजे 8-9-10 बजे के आसपास आए थे। लाने के बाद वो अधीक्षक किसको गाली दे रहे हैं, जो मेरे ड्यूटी पर लेके मेरे रिपोर्ट लेके तुमको गाली, तुम लोग करके नहीं दे सकते, ये नहीं उनको वो एक दिन करके देंगे सर,
हर बार भी कौन देगा, वो तो आपको करना चाहिए, आपने क्यों नहीं किया। तो उन्होंने फिर बाद में राष्ट्र को पता था कि ये क्या की बातें बहुत जल्दी अपने वकीलों को बताती है, तो उन्होंने तुरंत आपको व्यवस्था किया। उसके बाद सारी लड़कियों को फिर वो पेड हर महीना हर उसको मिलने लगा, क्योंकि हम लोग बीमारी से इतने, अब जब ये बोलते थे देखिए सर ये बीमारी हो रहा है, तो क्या बोलते हैं ये आदिवासी लोग है ना, ये वैसे ही बात मारते हैं, मतलब हम लोग गलू मारते हैं उनको, तो ये बोला जाता। मैं हम लोग बोलते थे कि आप घर के कपड़े लेते पेड़ लेते तो उसी कपड़े को वो महिलाएं गीला ही रहता है, बरसात में सूखता नहीं, उसको पहन लेते हैं, अधिक बीमारी होती है, आप लोग बदबू देते हैं। आप सही मायने में कुछ क्यों नहीं करते, आप माँ वाली बोलते हैं लाख के घर कितना परेशान कर, तो क्या बोलते ये गाँव वाले को पेड़ ही तो पहनना लिया था, मतलब हर बात पे हम लोगों को ये अपना देना। ये तो फिर एक तरफ सरकार होती है कि बहुत बड़े माओवादी को खिलाते हैं, जबकि वो एक आदिवासी सीधे साधे भोले बात को कुछ नहीं आता है, तो माओवादी का काम कैसे किया, बंदूक कैसे उठाएंगे, ये सोचने वाली बात है ना, लेकिन उनको ये बोल खिलाया जाता है। तो ये हमारे जेल की स्थिति है। लेकिन आप सबके बीच में इस बात को मैं इसलिए जेल के बारे में ज्यादा करते हैं, बाकी छत्तीसगढ़ की जेल, बाकी जेलों में भी ऐसी हालत, जबकि मैं अपने सफर में 4 जेलों में तय किया था, तो जो मेरे को जेल में दिखा थोड़ा बहुत तो तिहाड़ जेल में ठीक था। अब तिहाड़ जेल का अनुभव को मैं छत्तीसगढ़ में जाके लड़ती थी कि तिहाड़ जेल में ये मिला, तिहाड़ जेल में वो मिला, तिहाड़ जेल में ये सब मिली, उस तरह की मैं वो करते। उसके बाद जो कलकत्ता जेल में वहाँ भी बहुत बुरा होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जेल तो मानसिक रूप से पूरी तरह पड़ता नहीं करते हैं। इतना टॉयलेट को धुलाते थे, टॉयलेट में जब वो जाते थे हम बोलते थे कि टॉयलेट, अब वो रखते हैं इतनी बड़ी बड़ी झिल्लियां आग में डाल के टॉयलेट का जब सब लोग डर जाता था टंकी, तो आपस छुपाते थे, उसके बाद बोलते थे देखो ना दीदी क्या है क्या, तो मैं बोलती नहीं करेंगे ये सब काम, नहीं करना तो पड़ेगा दीदी, और उसके बाद में फिर आगे खाना भी खाना। तो तब हम जेल वाले सब करते थे। एक बात बताइए कि इसके लिए आपके पास कोई नियम नहीं है क्या, इसके लिए कोई करने वाला हम कोर्ट, फिर जब भूख हड़ताल में भाई महीना ने किया, लड़कियों ने भी किया पहला, तब जाके हमारा जो टॉयलेट की जो है ये थी, पेपर देना, 2 वक्त का खाना पेट पर मिलना, और ये पूरा डाइट, और ये जो दवाई महिलाओं ने जीत गए, लेकिन पुरुषों का वैसे था। अब जो बच्चा वहाँ पैदा होता था ना, आप एक ही नहीं माने तो पुरुष को पहचानने से डर जाता था, और उसमें उस बच्चे को ये पार्ले बिस्कुट के सिवाय कुछ नहीं मालूम था। जब हम छुपा के लिए भेजी या मतलब ऐसा लेके चले जाते थे कभी बिस्कुट को दूसरे, तो बोलते थे क्या चीज है इसको हम नहीं खाएंगे, वो बच्चा। और जब वो बच्चा जो पैदा हुआ 2 साल के बाद हम बाहर निकालते पुरुष को देख के वो डर से रोका था, क्योंकि कोर्ट ले जाते थे तो पुरुष महिला एक साथ जाते थे, तो बहुत डर जाता था बच्चा। तो ये स्थिति मतलब जेल के अंदर ऐसा क्यों, अगर वो बच्चा वहाँ पैदा हुआ है तो उसको इतनी डर और भय की जिंदगी क्यों, उसके लिए तो आजादी मिलनी चाहिए, उसको तो सब चीज से समानता मिलना चाहिए, उस बच्चे को हर चीज की पहचान होना चाहिए। जेल में अगर पैदा हुआ तो बच्चा कुछ नहीं पहचाने, वो सिर्फ इतनी पहचाने कि ये इसको खाने का चीज को ये खाना वाला इसको बोलते हैं, बाकी एक चीज, लेकिन वो उसको देख कर डरना, तो उस बच्चे के लिए भी वहाँ पर जेल में ये चीज नहीं है। तो बताइए कैसे उस बच्चे को अगर वो महिला से बाहर लेके जाए, फिर भी हम लोग कोशिश करते थे, हम लोग जब तक हम रहे हैं और भी हमारे बड़ी साथी, तो उस बच्चे को जबरदस्ती हम पुलिस के जेल में भेजने से वो नहीं रह पाता था, लेकिन हम लोग बोलते थे आने वाले दिन को तो बाहर जाना है बच्चे को, ये फिर नहीं रह पाएगा, तो बच्चे के लिए लड़ाई होती थी। वो माँ अपना वो खुद माँ अपना पेट का खाना को रख के बच्चों को खिलाती थी रात में। फिर जब हम लोग जेल में सब लड़ा गया, तब हमको फिर पेट खाना और बिनु के हिसाब से खाना और टॉयलेट की जो सफाई करवाना, वो सब ऐसे बिल्डिंगों का चुनाव होने के लिए महिलाओं से करवाया जाता था। जब महिलाएं चुनाव होती थी ना, जो पानी आगे आ जाता था, क्योंकि ब्लड पहले तो पूरा इन्फेक्शन पूरा फोड़ा होके उनकी शरीर से पूरी चमड़ी निकलते रहती थी, चूना का बहुत उसका हो जाता, तो वो सबका हमने देखा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मेरे को इस सब को लेकर मतलब मुझे जो अनुभव हुआ है, इसमें हमेशा वकील को सही उससे मतलब बंदी से बिल्कुल जो वकील अगर उस बंदी का केस लेते हैं, ये नहीं कि सिर्फ एक पैसे के लिए हो गया ऐसा, पर वो ऐसे ही एक पैसा ही कसम को मिल जाए, बंदी मर रहा है कि कट रहा है, क्या जरूरत है क्या नहीं है, उसे कुछ नहीं बोले, बस एक ही बात बोले बंदी से कि हाँ छूटोगे कब, तो बहुत जल्दी छूट जाओगे। तो ये है, तो मुझे लगता है कि बंदी और वकील का अगर रिश्ता अच्छा हो, और वो वकील अगर बंदियों के लिए एक सीरियस मतलब एकदम वो करके लड़े, तो बंदी की सुरक्षा हो सकती है और किया जा सकता है, और ये डिपेंड करता है, क्योंकि ऐसे तो आदमी नहीं जाएगा, तो वकील तो जा ही सकता है बंदी से, वो खुद उनकी केस लड़ रहा है,
तो बीच बीच में अगर ये चीज हो जाए, स्पीड अच्छी करनी हो जाए, तो हमारे जो अंदर बंदी हैं उनके लिए अब बेहतरीन किया जा सकता है। पर बहुत से ऐसे वकील हैं कि वो सिर्फ पैसे ही उनके लिए सब होता है, पर एक मानवता का जो सेवा होना चाहिए वो उतना नहीं करते हैं, जिसके कारण बंदी सिर्फ एक रिहा होने का इंतजार करती है और वकील को अपने धर्म नहीं बता पाती। पर मैं जो थी तो मैं हमेशा अपने वकील को अपने धर्म बताती थी, चाहे वो किसी तरह कॉलेज के पास मेरी बातें आती थी, हाई कोर्ट के वकील पास जाती थी, तो मेरे को बाद में परेशान करना थोड़ा कम हुआ लास्ट में। अब मेरी लाश से लेके हर चीज को मुझे बहुत अच्छा देखा जाता था, तब मुझे समझ में आया अगर वकील अच्छा हो तो बंदी की सुरक्षा यहाँ कैसा हो सकता हो जाएगा, ऐसा मुझे